Ms. Tanu, have you joined? IT support, please can you allow Tanu Shekhawat to put on her camera? Are you audible? I'm audible. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Good morning and a very warm greeting to everyone. First of all, I would like to thank you for joining us today in this webinar. I'm Tanu Shekhawat, a final year student of Political Science Honors. I'm very grateful to be here and welcome you all to this webinar on Civil Services, Dream of Many, Reality of Few, Strategy and Challenges. This webinar is organized by MIT School of Liberal Arts, MIT University, Jaipur, under the guidance of Dr. Rahul Tripathi sir and Dr. Neha Bhartiya ma'am, Assistant Professor, Political Science. Thank you so much for this opportunity. Now, I would like to welcome our guest speaker, Shri Chandra Prakash Meenaji, an Indian Revenue Service Officer of Batch 2010. Sir belongs from Narayanpur village in Thanagazi, Alwar, Rajasthan. During his initial career, Sir worked in Gujarat on various areas like investigation and administration as an assistant commissioner in Income Tax Department. Currently, Sir is posted in Jaipur as an additional commissioner of Income Tax. Sir has completed his schooling from Narayanpur and thereafter went to Rajasthan University for graduation, followed by a master's degree in political science. Not only that, Sir also holds a master's degree in taxation and business law from Nalasar University, Hyderabad. Being an incredible human and being a keen social worker, a computer lab and a library was recently established in the native village of Sir in our government senior secondary school. We welcome you, sir, and we are very eager to hear from you. Kindly grace us with your address. Thank you. Thank you, Tanu. Am I audible? Yes, sir, you are. Thank you, sir. Good morning, everyone. Thank you so much, Dr. Neha, Professor Rahul, for inviting me for this session. It is a pleasure to be here today as a guest speaker to share my insight on the subject Dream of Many, Reality of Few, Challenges and Strategy for UPSC examination. As you all know, the UPSC exam is one of the most competitive exam in India, and it considered to be gateway to fulfilling a career in the civil services. As a civil servant, I do have understanding of the challenges that a candidate face when preparing for this exam, as I have appeared in this exam thrice, and in 2 attempts I faced failure at the level of mains examination. So more or less I know what type of anxiety, what type of challenges is there when you entered in this examination preparation mode. So the UPSC exam is not only a test of not just academic knowledge, but it also tests your critical thinking, analytic abilities, decision-making abilities, and leadership qualities. Accordingly, the whole pattern of UPSC examination
covers these topics in their question papers, their interview, in all three stages. These aspects are examined. Therefore, it is essential to have a comprehensive strategy in place to prepare effectively for the exam. During our discussion today, I hope to share some valuable insights on how to approach the exam, including challenges faced by the aspirants, pattern of examinations, tips on developing a study plan, time management, selecting right study material, etc. I also look forward to hear from you about the session and topic. By the end of the webinar, I hope that you will have a better understanding of what it takes to crack the UPSC Civil Service examination and be better equipped to tackle this challenge. Thank you for joining us today, and I am excited to begin this discussion with all of you. So, let me. And why civil services? First of all, we need to understand that before preparing for this examination, what is the need of preparing this examination? So, civil service examination, as I already said, that it is one of the top most prestigious and competitive exam in India. It is conducted by the UPSC. UPSC basically Union Public Service Commission, as you all know, and the candidates selected through this examination are appointed for various administrative and civil service positions in the government of India and state as well, such as IAS, IRS, IPS, DANIX, DAPIX. There are many services, around 20-22 services are there. Thus, it is a common exam for all India services and central services. First of all, we need to understand what is all India services and what is central services. The services, the officers who are selected by UPSC and worked in the allotted to different states and work in different states are called as all India services like IAS, IPS, and IFS, forest service. But you will be surprising that forest service examination is conducted by UPSC, but that is a separate examination, not civil service examination. So 3 services constitute all India services. Out of 3, 2 services candidate or bureaucrats are selected through civil service examination, and as far as forest service is concerned, it is selected through separate examination, which has been also conducted by the UPSC. Similarly, there are central services, around 20 central services, including Indian Revenue Service, both income tax and GST. Now it called GST, earlier it was called custom and excise. And there are other Indian account service, and I will just, these are the services. Indian Administrative Service, as I told, this is All India Service. Indian Foreign Service, it is also a central service because it comes, once candidate selected, it comes under the central government. And as far as IAS, IPS is concerned, both are allotted to the respective states, and all their service rules and conducts are governed by the states. These are services for ready reference: Indian Police Service, Indian Revenue Service, 2 types of Indian Revenue Service, one from GST and then one from income tax, where I belong. Then Audit and Account Service, Indian Defense Account Service, Indian Postal Service is there, Indian Civil Account Service is there, Indian Railway Account Service is there, Indian Railway and Personnel Service is there, and Indian Trade Service. So, first of all, we need to understand that in common parlance, everybody thought that it is an examination for IAS only. In local language we say ना कि हम जब भी कहीं कॉलेज में स्कूल में बात करते हैं तो IAS एग्जाम की तैयारी करनी है, तो this examination is not for only IAS Indian Administrative, it also for around 20 more services, and the allotment of these services depends on 2 things. First, your merit, and second is your choice. If you not able to get good merit, good score, then you are opting for some service, but the person who is having rank above you, who is opting that service, and there is only one vacancy for that service, so he will be getting that, you will not be getting that. So the service will be allotted on the basis of 2 criteria. One is, first is merit, second is choice.
sometimes candidate have merit, but he does not want to go, do not want to go in that particular service. So these are the broader services. From this list, you can see that except from state and central services, there are some services which also belongs to union territories, like Delhi Andaman Nicobar Island services. Similarly, there is another service which is Pondicherry Civil Services. So these recruitment are done for union territories also. Now come to the point of what is the importance of this CSC Civil Service Examination, which is conducted by UPSC. So first and foremost, this is a gateway to prestigious service. The UPSC exam offers a vast range of exposure opportunities for the candidate who wish to serve the country. The exam offers recruitment to various positions in administrative service, as I told you, and in police service. And after recruiting in this service, you will get various type of exposure during your career, and you reach up to the level of secretary, or some of the IAS or civil servants are reached up to the level of constitutional post, subsequently appointed as a governor, CAG, or Union Public Service Commission chairman, etc. So it is a gateway for a prestigious career. Job security and stability, as you all know, as far as government sector is concerned, this is the most apex jobs where one can apply. These all services are group A services, and these are the apex services in as far as government service is concerned. So it gives you security and stability. Once you are selected, you will be retiring at the age of 60 years, unless until your conduct is not as per the conduct rules or service rules. So it gives you security in comparison to private sector. Then you got national level exposure. As far as salary is concerned, you got good salary. Nowadays, the apex scale is 2,25,000 basic salary is there. So salary is also very good. Then I think influence and power. So as far as influence and power, I specifically mention that positive and progressive. पहले एक धारणा थी या ऐसा सोच थी लोगों की कि हम पावरफुल होंगे, या रेड लाइट बेकन का कल्चर था, या हम किसी को, तो अभी जो पावर एंड इन्फ्लुएंस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. So we need to understand in positive perspective. If somebody selected for civil service and he thought that I'm powerful, I can change anything, he cannot do. But if he wants to do some positive changes, he can definitely do, but he cannot misuse his power or post. And the person who thought, the person who is thinking that after selecting in civil services, I will do this and that, he will not survive in the civil services, because nowadays transparency is there. और जो पुरानी कहानियां लोगों ने सुनी है, वो अभी ऐसा कुछ होता नहीं है. सिविल सर्विस में more responsibility, more transparency is there. Then let us come to the point, why dream of many and reality of few? Because everybody wants to become civil servant, and it is nothing bad in having that much of aim, but there are procedures which we face during the preparation of civil services, that out of, you can see from this slide that around 5,56,000 candidates appeared in civil service preliminary examination, while in 2020 a total of 10 lakh, around 10 lakh candidates had applied for the examination, out of which only 4,86,000 candidates actually appeared. So half of the candidate itself withdrawn from the filing of form and then appearing in the exam, first stage of exam. So you need that much of motivation कि आप समझिए जहाँ 10 लाख ने भरा 5 लाख ने एग्जाम दिया, तो या तो सिलेबस देख के या उसका पैटर्न देख के या उस लेवल का अपना कॉन्फिडेंस ना पाके 50% ऑफ कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी विथड्रॉन. और ये पैटर्न वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, गोज ऑन एवरी ईयर, मोर और लेस सेम 5 to 10% वेरी होगा, बट
it goes on every year. And you will be surprising, out of 10 lakh candidates who filed application for civil service posts, only around 1000 candidates able to qualify for final selection after 3 stages of examination. These are the numbers for ready reference. In 2015, you can see 9 lakh candidates who applied for prelims examination. Then 4,63,000, around 50% appeared. 15,000 only qualified for prelims examination. Then 2,700 around qualified for interview, and final selection was 1164. Similarly, next year 11 lakh, 9 lakh, 47,000, 10 lakh, 41,000, 11 lakh, 35,000 applied for civil service preliminary examination, and half of them only able to sit in the exam. और किसी ने रोका नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो गए, कहीं ना कहीं उनको लगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम देना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको लगा कि मुझे मेरी प्रिपरेशन नहीं है, या उनके माइंड में कहीं ना कहीं आया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उस वजह से तो 50% ने तो अपनी जो रेस है वहीं छोड़ दी, उन्होंने दौड़ना ही नहीं शुरू किया। जो 50% बच्चे इस रेस में दौड़ने के लिए, उनके में से आप देखिए आउट ऑफ 5 लाख में से ओनली 15,000 क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यू कैन इमेजिन हाउ टफ दिस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज। Then around 800, 9,000, 900 and 1,200 final selection is there. Recently, this post was shared in every social media feeds that artificial, even ChatGPT, you all know about ChatGPT. So this IAS, retired IAS PK Das has conducted administered the test on ChatGPT, who is supposed to be most intelligent most effective artificial intelligence as on today. So in that test, artificial intelligence, no match for human intelligence, ask for answer simple question from GS paper first and second of civil service preliminary examination 2022. OpenAI chatbot ChatGPT failed to qualify. तो जिसके पास इतना बड़ा डेटा माइनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यू नो ChatGPT में इतना डेटा माइनिंग किया गया है कि if you type anything, that artificial intelligence give you the correct answer, almost correct answer. In spite of that artificial intelligence fails in the civil service examination. The reason behind this, that the pattern of civil service examination, including prelims, have a different type of concepts. It does not only ask you the straightforward academic questions. It includes various traits, behavioral aspects, analytical abilities, as I said earlier. So it is very unique test system, but it is not difficult. So this is the broad aspect of the civil service exam pattern UPSC conducts it, and officially it is there is two stages. First is preliminary exam, which is qualifying nature. Preliminary examination marks does not matter in your final selection, but it is qualifying in nature. Once you qualify for mains examination, then you appear for mains examination, and if you qualify for mains, then you appear for interview, and then after interview, final selection will be there. So the final selection merit list was drawn from the marks you score in mains examination along with the marks of interview. So broadly, that's why we in practice we divide it in three phases: preliminary, mains, and interview. And since inception it is in this form only, but so recently, in I think 7-10 years back, there were few changes which were made in the civil service examination pattern. So reduction number of papers. Earlier there were 3 papers in preliminary examination, 100 marks each, 2 general studies paper at all time in 2010, 2 general studies paper and 1 optional subject paper. Now instead of 3, there are 2 papers. Optional subject has been removed from preliminary examination, and new papers in the form, first paper is general study and second paper is CSAT is introduced.
We will discuss it later on in detail. Then change in the type of question. New pattern will have more objective type question that will test the analytical and logical ability of candidate. As I said earlier, the traditional rote learning based questions will be replaced by more thought provoking and analytical question. Emphasis on current affairs has been given in the new pattern. It has given great weightage on current affairs. 50% of questions comes from current affairs. So now candidates who are appearing in civil service exam need to be updated regarding current affairs. He has to go through newspaper, he has to go through various magazines, he has to gather the information from social media or internet or wherever it is available. He need to go through that. Otherwise, it is very difficult to qualify the exam. Similarly, a new stage of the examination called integrated personality test is introduced. Earlier, the interview was there, but it has been given more weightage in the form of marks also. Earlier, 250 marks were there for interview. Now it has been given 300 marks. So marks weightage has been increased. And then IPTO aim to test the candidate's personality trait, leadership quality, and communication skills were also introduced in the interview. We'll discuss on later on how to behave in interview and other things. So this is the broad aspects of preliminary examination. It consists of two objective type of papers that test the candidate's knowledge in subjects such as general studies. This includes Indian polity, economy, history, and geography, first paper. And reasoning ability, aptitude of the candidate is examined in the second paper, which is called CSAT. Similarly, main examinations descriptive type, and that test the candidate's understanding about the subject matter, analytic, and communication skills. It consists of 9 papers, out of which 2 papers are compulsory in nature, basically Hindi and English, or regional language or English, whichever is there. And 7 papers are marks from remaining 7 papers are counted for merit. And interview, as I told, 300 marks is there, and this is the final stage of civil service examination. So this is the broad outline of preliminary examination. First of all, it is objective type question will be there in these 2 papers, general studies and CSAT. And there is negative marking also. And first of number of question in first paper is 100, marks is 200, and hours is 2 hours. Similarly, weightage of CSAT has been given. You can see that only 80 question will be asked in CSAT, and marks are 200. Even in CSAT, there is 33% of qualifying minimum marks. If somebody is qualifying in total marks, if he is qualifying for preliminary examination, but if he fails to achieve 33% in CSAT, he will not be qualified at all, in spite of scoring much higher marks in total. Then means it is a descriptive paper. You have to write answers of each and every questions which has been asked in civil service examination. And most importantly, there is a essay writing, which have 200 marks. I think right now 250 marks. It has been increased. Earlier it was having 200 marks. So essay you will get 4 or 5 points, on which you have to choose 1 point, and on 1 point you have to write an essay. And you will be surprising, essay itself have very importance role in selection of civil service examination. Even हमने देखा है कि हमारे साथ के कुछ कैंडिडेट्स ने जब हम तैयार करते हैं, आज भी ट्रेंड है कि 250 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं किसी कैंडिडेट को, एंड दूसरे जो कैंडिडेट है उसको 200 मार्क्स मिल रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड है कि 20 and 200 का गैप है, उसको कवर करना मेरिट में इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो lot of emphasis has been given on essay in the mains examination. Then first paper is, as I told, it is a compulsory Indian language. It can be Hindi for North Indians and
from South Indian and other states, it can be a regional language. And English, both are qualifying in nature. If you fails in to qualify these two papers, then your marks will not be evaluated. Other 7 papers marks will not be counted for selection or qualifying for mains examination. So these are basic hurdle. And as far as I remember, there are 5 to 10% candidates who disqualify from in these compulsory papers itself. So it is very important to focus on these 2 papers. क्या होता है कि जब तैयारी कर रहे हो तो हमें लगता है तो क्वालिफाइंग नेचर है, तो हम कैजुअली ले जाते हैं. जो इंग्लिश मीडियम को हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, तो या तो वाइस वर्सा होता है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में फेल हो जाते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स में, एंड हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में, क्योंकि वो फोकस हमारा कम होता है. वी devote our time to most of time in optional subjects. So then as I told earlier, there were earlier 2 optional subjects and total 4 papers were there before 2012. Now only 1 optional subject is there, and total marks is reduced from 1200 to 500 only. Similarly, weightage has been given to the general studies, and 2 more papers are introduced in the form of general study paper 3 and 4. We'll go further. So what subjects comes under general studies? Paper first includes general Indian heritage and culture, history and geography of the world, society. General studies paper 2 covers under governance, constitution, polity, social justice, international relations. General studies paper 3 covers technology, economic development, biodiversity, environment and security and disaster management. 4th paper is very important. See, it covers ethics, integrity and aptitude. Earlier this thing was not there in the civil service examination. It was introduced after 2012 I think, जहाँ तक मुझे ध्यान है. तो इसमें it is very important to, और जो इसका पैटर्न आता है, you will see, अगर आप जब जो लोग तैयारी कर रहे हैं able to know कि there are not be direct question. There will not be direct question. Normally they ask a question and ask candidate to reply that question. On that reply basis, the examiner will examine your integrity, your aptitude, your ethics, your decision making abilities. So this paper is very crucial. So sometimes it looks very simple. अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और या फिर कोई नोट्स पढ़ेंगे या कोई रेडी रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे, तो किसी कोई बुक्स हो नहीं सकती है, स्टडी मटेरियल हो नहीं सकता है. सो वो स्टैंडर्ड ऐसा लिखना है ऐसा, लेकिन उसका मार्किंग का जो पैटर्न रहता है वो प्रोफेसर विल नो बेटर देन मी, कि उसमें वो आंसर से ज्यादा कैसे लिखा गया है, आपने क्या उसका इंटेंट रखा है, उस पर मार्किंग होती है. And the 2 optional subjects, 1 optional subject out of which 2 paper will be there, can be selected from any of these subjects: agriculture, civil engineering, geology, mechanical engineering, psychology, animal husbandry, commerce and accountancy, history, medical science, public administration, anthropology, economics, law, philosophy, mathematics. These are some. Other than above subject, candidate can select literature of any one of the following language: Assami, Bengali, Bodo, Dongri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, कोंकणी, मिथैली, मलयालम, मणिपुरी. तो ये जो लिटरेचर वाला पार्ट है, ये जब हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे समय में हमने देखा कि आई वाज आल्सो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट, आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री वाज सब्सिडियरी, आई ऑप्टेड फॉर सब्सिडियरी. But as far when you make strategy, then you will find able to know कि जो रीजनल लैंग्वेज लेके और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, दे स्कोर मोर मार्क्स. और वहां पे कोई एक्सेप्ट स्केलिंग, कोई ऐसा पैमाना नहीं होता है कि लैंग्वेज वाले को मार्क्स देंगे, या आपको अल्टीमेटली कंप्लीट तो ऑल इंडिया लेवल पे करना होता है, तो आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो. तो बहुत सारे लोगों ने रीजनल लैंग्वेज को, पाली को लेके बहुत सारे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. तो जब जहाँ स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां पे लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. अब इसमें ये सही है गलत है इस टाइप से क्यों लेते हैं, क्योंकि आप समझिए पाली अगर कोई करेगा तो पाली के
कि टीचर भी पूरे इंडिया में 3 या 4 प्रोफेसर होंगे जिनके पास कॉपी चेक होती होगी। तो आप उनमें से किसी एक से कोचिंग कर लेते हैं तो आपको उतना ही नॉलेज आता है जो आपको आपका जो ट्यूटर होगा या जो आपका जो एग्जामिनर होगा उसका उसकी जो सोच होगी और आपकी सोच मैच करेगी। एज फार एज पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न, या ऐसा ही जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव है, जो जिसके वेरियस विचारधाराएं हैं, जिसमें अलग अलग थॉट्स के प्रोफेसर्स हैं, लेफ्टिस्ट अप्रोच भी है, डीयू की अलग अपनी अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलग। तो जब आप वहां पे आपका जब एग्जामिनेशन होता है तो देन इफ यू हैव आंसर्ड योर रिप्लाई क्वेश्चंस in rightist manner and your copy reaches to a professor who have leftist approach, then you will be in mess. So this need to be understand as far as main examination is concerned. As I said earlier, importance of communicational skills and confidence is most important aspect of interview. Officially, it is called interview personality test and counted as part of the main examination for merit ranking purpose. I already said. The board would judge the candidate mental and social traits by asking questions of general interest. Some of the qualities that the board look for are mental alertness, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgment, variety and depth of the interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity. So जब आप में से अगर किसी ने इंटरव्यू दिया होगा तो ही विल नो कि और ही और शी विल नो कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करते हैं तब से वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। समटाइम्स दे ड्रैग यू टू द पॉइंट जहां पे कोई वो आपकी पर्सनैलिटी को एग्जामिन करना चाहते हैं कि आप कैसा रिप्लाई दे रहे हैं या आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आपके बॉडी का पोस्चर उसमें एग्जामिन किया जाता है, आपने वेदर यू क्रॉस योर लेग और स्ट्रेट आपने लेग रखे हैं वो एग्जामिन। देयर आर मेनी मेथड और दिस इज टोटली सब्जेक्टिव थिंग। सो at the time of interview there are 5-7 person from prominent area will be sitting there, and once you entered everybody will be examining you on different aspects. So it is very crucial as far as civil service exam is concerned. Then after going through all this syllabus and importance of civil service examination, sometimes it seems so as we saw the data that out of 10 lakh only 5 lakh students appeared in preliminary examination itself. So they thought that it is a mission impossible. So it is not a mission impossible. It only required a right strategy and motivation and dedication. These are the basic funda which will be given by every coaching tutor. जहाँ जाएंगे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिस एंड रिवीजन करिए आप जो भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. आई एम नॉट डिनाइंग दीज पैरामीटर्स, दीज आर वेरी क्रूशियल पैरामीटर चूजिंग ऑफ सब्जेक्ट. आई ऑलरेडी सेड दैट अगर आप मैथिली भाषा लेते हैं, पाली लेते हैं, डोंगरी लेते हैं, तो डोंगरी में आपके पास आप देने वाले भी कम है, एग्जामिनेशन का पेपर चेक करने वाले भी लिमिटेड ही लोग हैं, तो वहां पे आपका कंपटीशन भी कम हो जाता है एंड देन थॉट प्रोसेस भी सेम हो जाती है. So these are very important. Mock test, once you qualified for mains examination, so mock test is very important. Everybody appear, go for the mock test in different coaching institute. Sometimes universities will also conduct such a test. So these are very important, but these are basics. In my opinion, consistent hard work and perseverance is the most important. जब तक आप में जुनून नहीं होगा, जैसे इस बंदे में है कि दोनों पैर खोने के बाद में उसको दौड़ लगानी थी, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है उसके बगैर सिविल सर्विस में सिलेक्ट होना बड़ा मुश्किल है. और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दो मोटिवेशनल स्टोरीज बताना चाहूंगा. एम आई एबल टू कन्वे माई मैसेज ना? Absolutely, sir. Absolutely. So, please carry on. हाँ, Yes. तो there are 2 example in my batch. एक जो सिविल सर्वेंट मेरे साथ सिलेक्ट है, भोलाराम देवासी. आई एम नेमिंग हिम हियर, दैट्स नॉट एन इशू. तो ही बिलोंग्स टू देवासी ट्राइब और कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान इटसेल्फ, जालोर. तो देवासी आपको पता होगा कि जो ऊंटों का पालन करते हैं और भेड़ के जो हम बचपन में देखते थे वो रोड पे भेड़ों के लाते थे जब गर्मियों के दिन होते तो नॉर्थ इंडिया में आते हैं.
उस फैमिली से बिलोंग करता है और उनके हिज फादर वाज डूइंग दैट वर्क ओनली। ऐसा नहीं है कि वो कोई वेल टू डू थे, वो अपने ऊंट पालन और भेड़ पालन और वही व्यवसाय था। He qualified 12th and thereafter appeared for STC examination and become third grade teacher in Rajasthan. Then he completed his graduation from correspondence. Then become second grade teacher. Then thereafter become first grade teacher. And finally, after 7 years of a struggle, he becomes civil servant. And he's working as additional commissioner Kolkata right now. So he belongs from a very humble family, no coaching at all. Even he has not appeared for mock test. Similarly, in my case, Neha know that I have never done any coaching for my civil service examination. For interview, I appeared in some mock test in different institutions. But as far as prelims and main examination, I never attended any coaching institute. So, Bholaram Devasi कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, बस हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज मस्ट। सेकेंडली, एक जो है श्रीनिवासन टोटा करके मेरे बैच से हैं, he was bus conductor for 6 or 7 years, and during this 7-year tenure he appeared in civil service examination 4, 5, 7 times and become civil servant. So out of 100 selected candidates, there are people from different background, different conditions, और सबने एक कॉमन चीज देखी है कि कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटी है उनमें, या डिटर्मिनेशन है, या हार्ड वर्क करने का है कि मुझे बनना है। तो सिविल सर्विस में काम मुझे जो लगता है कि अगर आप सिविल सर्विस के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंड मेकअप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बिल्कुल आप एक सेकंड ऑप्शन जॉब सिक्योरिटी लेके चलिए। समटाइम्स होता है कि सिविल सर्विस टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, तो आप कहीं भी किसी भी एसएससी में या टीचर या प्रोफेसर जो भी आप बनना चाहें बन सकते हैं, लेकिन आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए इस चीज का कि आपको यही बनना है। इन माय केस I selected for Central Secretariat Service through SSC, and I joined ISTM, Indian Institute of Secretary Training and Management at Delhi. I completed my training from ISTM and posted in Ministry of Corporate Affairs. I quit that job and appeared for Civil Service main examination and joined second job in Central Excise Department as inspector. And then I selected in that. So in my mind, I was clear that I have to go for Civil Service only. Though in that process, I selected for RAS and that 2 other services, though other things are there, but I was clear from day first that I should work hard for the civil service. So I'm not unique at all. There are number of examinations. If you will go in social media, you will be able to know there are thousands of civil servants who struggle in their life and become civil servants. So it is not a tough task at all, not a mission impossible. The only key is consistent hard work, determination, and perseverance. Now come to the, as I told that these are the formula which have been given, which can be given by anyone: time management, consistency, practice and revision. These are detailed key or strategy which I can share with you with my experience. First of all, understand the exam pattern and syllabus. Sometimes what happens that a aspirant go to the Delhi and join the coaching institution, and whatever that coaching institute give him to read, he just going to read it day in and day out. और उसको समझ में नहीं आता है, वो तो पढ़ के इतना मंगल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है. So coaching is essential if you feel that you need coaching, but first of all, you need to understand the exam pattern and syllabus. If you are not able to understand the exam pattern and syllabus, you will not be able to understand the question at all. So before starting your preparation, you go through the exam pattern. Last year से क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, वो लेके आइए. उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ना है आपको. जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में जब भी कोई चैप्टर शुरू कर रहा होता था, तो मैं सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में से देखता था कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछते हैं. अगर मैंने हिस्ट्री में अकबर के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, अकबर के चैप्टर, तो आई ट्राई टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस which belongs to medieval history या particularly for अकबर. और या मैं पॉलिटिकल साइंस में जा रहा हूँ तो रूसो पे कोई थ्योरी आ रही है, तो आई
फर्स्ट आइडेंटिफाई कि रूसो पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा रहा है एंड व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम मी. सो एट द टाइम ऑफ स्टडिंग द बेस बुक आई कैन पॉइंट आउट कि उस क्वेरी का आंसर इसमें से निकल सकता है. एंड आई नॉर्मली यूज टू हाईलाइट दोज पैराज विच आर इम्पोर्टेंट. तो आपने एक बार समझ लिया कि पूछना क्या चाह रहा है सामने वाला, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फोकस उन्हीं पैराज पे जाएगा. अदरवाइज आप सब चीज याद करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी. Secondly, make a study plan. Once you have gone through the syllabus, make a study plan that suits your requirement. Your plan should include daily, weekly, monthly. Sometimes क्या होता है, हम weekly target कुछ fix किया, we will not able to complete that, then again revise it or try to compensate in next week. So daily basis पे, weekly basis पे, monthly basis पे plan should be there. And whatever missing in your plan, you can try to cover it in next week's plan or next month's plan. Similarly, newspaper reading and magazines are most important thing. It keeps you updated about latest news, events crucial for UPSC exam. Read newspaper and magazine to stay informed about current affairs and relevant topics. Similarly, editorial of newspaper is must, because front page news and last page news are not so much importance. Editorial gives you insight about a particular issue, and you will able to know the view of any subject. Sometimes they give two view on same subject. एक आपके फेवर में होगा, एक अगेंस्ट में होगा. इंडियन एक्सप्रेस में होगा या हिंदू में भी इस टाइप के आते हैं आर्टिकल. एंड साइंस एंड टेक का भी एक पेज होता है, तो उसमें आपको यू विल एबल टू फाइंड आउट टू व्यूज. तो अगर आप वो पढ़ते हैं तो यू विल एबल टू नो कि ये राइट, ये व्यू एक है, ये व्यू एक है, देन यू कैन रीच एन कंक्लूजन. और जब यही आंसर, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस में आता है, तो यू कैन एबल टू राइट बोथ द व्यू एंड फाइनली यू गिव योर कंक्लूजन. ऑन दैट बेसिस यू विल स्कोर मोर मार्क्स देन अदर कैंडिडेट्स. एक मिनट में फैन ऑन करता हूँ. Then focus on NCERT books. This is my suggestion. NCERT books is like Bible of for civil service, क्योंकि it gives you a basic concepts. After going through the NCERT books, normally you start from 6 to 12 classes exam NCERT books. Just go through it. You need to understand each and everything. 6 to 10 you just read it out in one go, and 11 12th are more important in economy, polity, history. If you'll go through those books, then you have your basic concepts will be clear. Then practice writing, crucial for UPSC exam. Start practicing answer writing regularly and get feedback from your mentors or friends. Sometimes क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जो लिमिटेड टाइम में आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, तो आपका क्वेश्चन छूटता है. जैसे मेरे साथ था, मेरी प्रैक्टिस की बहुत अच्छी नहीं थी. मैं सेटवर्क बताता हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट ईच पेपर में, स्पेशली जनरल स्टडीज में 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन छूटते ही थे. तो आप समझिए कि जब आपको 300 का मार्किंग या 250 के मार्किंग में, आपकी मार्किंग ओनली 230 में से रह जाती है इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड इट. तो प्रैक्टिस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, राइटिंग कि जब प्रैक्टिस आप करते हैं और आप उसको किसी को मेंटर से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से चेक करवाते हैं, तो उसमें जो करेक्शंस हैं या उसकी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी एबल टू स्कोर मोर मार्क्स. देन मॉक टेस्ट. Once you qualify for interview, definitely join some mock tests from some institutes. You can ask your friends to become panelist and take your mock test. But most importantly, sometimes what happens, in my case, I will tell you, I was working in the CSS and I quit the job and then joined the excise department in Bombay. So at the time of mock test, every coaching institute mentors were guiding this and that. But मैंने सोचा कि मेरा जो mock इंटरव्यू होगा, मुझे नहीं लगता कि ये सब जनरल स्टडीज मेरा टेस्ट करेंगे, या बिकॉज उनके सामने मेरा प्रोफाइल है, आई हैव क्वालिफाइड 3 एग्जाम विद इन 2 years एंड आई एम वर्किंग इन दीज डिपार्टमेंट्स. तो आई वाज थिंकिंग दैट डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क अबाउट माय सर्विस मैटर्स, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन होगा कि आप ये जॉब छोड़ के इसमें क्यों गए. सो आई वाज रेडी विद दोज आंसर्स.
किसी भी मॉक टेस्ट में नहीं बताया था। तो हमेशा आप अपने प्रोफाइल को पहले स्टडी करिए। उन्होंने पूछा कि आप एक्सरसाइज में क्यों गए, आपने जॉब क्यों छोड़ी, देन आई देयर वाज आंसर रेडी बिकॉज आई थॉट अबाउट दैट कि मुझे क्या बोलना है, तो आई वाज रेडी फॉर दैट एंड दैट आंसर गोज वेरी वेल। तो सेकेंडली जब मैं छोड़ के जब मैं जीएसटी में एज इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ एंड आई एम appearing for a administrative grade or commissioner rank, then they definitely ask me the policy issues. So at that time GST matter was going on, GST council, GST आया नहीं था, GST act was draft was prepared. So most of time they ask me about the GST, then central secret service and other things. So कैंडिडेट मस्ट बी अंडरस्टैंड कि आपको जनरल स्टडीज में नहीं जाना है, वो जनरल स्टडीज या आपका समटाइम्स दे विल आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स या कुछ आपके जो एट दैट टाइम पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन पे आपका व्यू लेते हैं, बट ऑलरेडी वो आपके एग्जामिनेशन को, आपके राइटिंग स्किल्स को, आपके जनरल स्टडीज को प्रीलिम्स और मेंस में एग्जामिन कर चुके हैं। तो आपके पर्सनल ट्रेट्स को, आपकी लीडरशिप स्किल्स को, आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को वो समझने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। Similarly, regular revision is very much important, and most and important is stay positive and motivated. मैं अपने साथ के बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में जानता हूँ, इस ऑफिसर्स या जो मैं कह रहा हूँ एस्पिरेंट्स जो मेरे साथ में थे, दे वर मोर इंटेलिजेंट देन मी। वो नहीं क्वालिफाई कर पाए बिकॉज समवेयर दे गेट इनटू डिप्रेशन और इतने मोटिवेटेड नहीं रहे या कहते हैं हिम्मत हार गए। तो एक ये चीज आपको रहनी है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई है, जो ये जो है अलर्टनेस। देन सोल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 5 years एटलीस्ट। जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि लास्ट ईयर्स में क्या पैटर्न रहा है, तो यू विल एबल टू नो कि मुझे क्या आंसर करना है। सिमिलरली बहुत सारे केसेज मैंने देखा है जिनका एकेडमिक्स में अच्छे हैं या जो सिविल सर्विस के एग्जाम से पहले बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, बट ड्यू टू नर्वसनेस वो एग्जाम के 3 hours या 2.5 hours जो होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। वहां आपको डिसीजन लेना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन अप्लाई योर माइंड एंड गिव द आंसर। समटाइम्स ड्यू टू नर्वसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे जो टैलेंटेड और वेल प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो लास्ट 2 and 3 पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, सोल्व क्वेश्चन पेपर, अलर्टनेस एंड फोकस अप्रोच। बिकॉज एग्जाम में 2.5 hour 2 hour फोकस रहना बहुत जरूरी होता है। आपने क्या तैयारी की है इररिलेवेंट हो जाता है अगर आप वहां पे आपने फोकस खो दिया तो। सिमिलरली एक पॉइंट जो मैं यहाँ मिस कर गया, आपने देखिए, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं क्या प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते ही दे बिहेव लाइक बिकमिंग सिविल सर्वेंट, और जैसे लग रहा है बन ही गए हैं। नो डाउट आपको अपने कंडक्ट को अच्छा रखना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी ट्रूथफुल। आप समटाइम्स आप योर पेरेंट्स विल बी आस्किंग यू क्या कर रहे हो बेटा, आप घूम रहे हो और बोलो मैं पढ़ रहा हूँ, but you know that what you are doing. So be truthful to yourself, be consistent hard working guy, and if you have that much of confidence and determination you will definitely able to qualify the civil service examination. These are basic resources for, there are other also, but I, because 10-12 years back I was preparing, so trends are changing every year, but these are basics which need to be go through by each aspirants. There is Indian Polity by Lakshmikant. Nia can also guide you about this. And the Modern India by Bipin Chandra, Indian Struggle by Bipin Chandra, Geography of India by Majid Hussain. These are basic reference books. Economic Survey of India by Ministry of Finance होता है, एक योजना करके बुकलेट आती है जो मंथली बेसिस पे योजना भवन से प्रकाशित होती है। वहां से वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, उसमें बड़ी पतली सी बुकलेट आती है। आई यूज टू रीड दैट। देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय माजिद हुसैन, जनरल स्टडीज पेपर अरिहंत पब्लिकेशंस के आते हैं, टाटा मैकग्राव हिल्स के भी आते हैं, पहले क्रॉनिकल्स के भी आते थे हमारे समय में। तो ये चेंज होते रहते हैं। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह का है, इवन जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उसकी भी एक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक की बुक आती है, वो बड़ी मेरे लिए काफी वो छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रही है। एंड एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बाय सुब्बा राव। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये किसी बुक से नहीं पढ़ा जा सकता। इट इज ऑल अबाउट ग्रूमिंग।
बिहेविंग पार्ट है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दो इट हेल्प्स यू, बट अल्टीमेटली आपकी सोच, एप्टीट्यूड क्या है उस पर डिपेंड करता है। और न्यूज़पेपर एडिटोरियल मैंने बताया, दीज आर मस्ट, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। इफ यू समबडी एबल टू रीड हिंदू देन मोस्ट वेलकम थिंग, और वो नहीं पढ़ो तो इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस में हिंदू में एक साइंस एंड टेक का भी पेज आता है, वो भी पढ़िए, जो 6th-7th नंबर का आता है। दीज आर बेसिक एग्जामिनेशन। So I think we are exceeding time, so I am concluding with these remarks. Clearing UPSC exam is not impossible task. First of all, we need to understand this, that this is not impossible task, in spite of the fact figure that out of 10 lakh, 5 lakh appeared in preliminary examination, out of 5 lakh only 15,000 qualify for preliminary examination, ultimately 1,000. But 1,000 में भी लोग आते हैं, और मैंने जिनकी बात की वेरियस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आउटस्टैंडिंग। इवन there are bureaucrats, civil servants who graduated 3rd division, who subsequently due to their determination and hard work they become civil servant. तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक्स में आप बहुत आउट, बट कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है, आपके बेसिक्स क्लियर है, आपने पढ़ाई की है, तो यू कैन अचीव योर टारगेट। Secondly, failing does not mean end of the world. There are lot of example who were not able to qualify the UPSC, but they excelled in other fields, other गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और अभी तो आप शार्क टैंक इंडिया वगैरह हम देख रहे हैं, न्यू स्टार्टअप वगैरह बनते हैं विद इन 20-25 की एज में, बहुत सारी फिनटेक कंपनियां लोगों ने खोल दी हैं। तो देयर आर व्यू, और नाउ इट इज द सिविल सर्विस ऑल्सो चेंज, टोटली चेंज। अर्लियर सिविल सर्विस का जो फिनोमेना था या जो बातें थी वो रही नहीं है। दैट इट ऑल्सो बिकम्स मोर corporate, or adopted more corporate culture, as well as become more transparent. Each and every rule is in public domain. You can even every citizen can access the file rules and claim their they can file their complaint or lodge their objections against any wrongdoing done by any civil servants. So overall the civil service is also changing, एंड जनरलिस्ट की जगह अभी स्पेशलिस्ट आने लग गए हैं सिविल सर्विस में भी। लेटरल एंट्री का आपने देखा होगा कि इफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को 5 ईयर के टर्म पे ऑप्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट में। तो आफ्टर लास्ट 10-15 ईयर द सिविल सर्विस इज ऑल्सो चेंजिंग वेरी फास्ट। सो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सिविल सर्विसेज आर जस्ट ए मीन, नॉट ए एम। जो लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ करने के लिए सिविल सर्विस में आए, एक बार सिविल सर्विस में आ गए हैं सब अच्छा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। द एक्चुअल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज qualifying civil service is different thing. Once you qualify, then you have to start your career. You need to learn lot of things. If you are in service like income tax, you in GST, you need to understand and learn the income tax act, all the criminal, all the civil acts and other things. Similarly, if you are in police, then you have to go through the police training, physical training, everything. So examination of civil service is one thing, and after qualifying civil service, you need to work hard. Yeah, I think 10 times more work hard. You need to at least be very careful, very punctual, very systematic. So that's why the pattern of civil service is like that, because the person who has such much of determination, perseverance, hard work, who can be definitely able to cope up with the new challenges faced by him during his tenure as a civil servant. And lastly, if you are behind the money, then pursue career in private sector or venture in the world of entrepreneurship. Most of the person ये भी है कि सिविल सर्विस में जा रहे हैं, will be rich, or no doubt there are good salaries, 2,25,000 basic salary in Texas scale, you will get 5-6 lakh at the top level, and at the middle level you will get around 2 lakh 50,000, and the entry level you will get around 1.5 lakh rupees per month salary. And there are other perquisites, vehicle, government accommodation, servants, so these are also included. But civil service is not for money making. If you have that much of determination that I need to be rich, then definitely you go for entrepreneurship and for other careers. With these concluding remarks, I end my presentation. Thanks a lot.
Thank you so much, sir, for this wonderful. I and hope this experience. I hope it was. Yes, sir. It's a very informative session, sir. Thank you so much for providing your insights, sharing your experience with us. So I would like to open the session for the students. If they are having any questions, please unmute yourself and ask question one by one. If you are having any query, any question you need to be answered by the resource person, please raise your hand and unmute yourself and ask the question. There was a question that, sir, can we supplement newspaper with monthly magazine? So yes, definitely there are monthly magazines. At our time there were Chronicle and Pratyogita Darpan was there. So we used to read that also. But you should not replace newspaper with the monthly magazines. You can definitely supplement newspaper with the monthly magazines. It will enhance your knowledge, because sometimes in monthly monthly magazines, they will give you a specific topic and a specific traits of civil service examination. So definitely you can do that. Then another question is from Pooja Saini, that how to write effective answer in mains examination. So there are, first of all, you need to understand. Okay, thank you, sir. Am I audible? Okay. Am I audible, Neha? Huh? Neha, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. So another question from Miss Pooja Saini, that, sir, how to write effective answer in mains examination. So my answer is that first you need to understand the question. Because without understanding the question, if you sometimes what happens, you read half of the question and you start writing the answer. And later on, after writing the answer, you realize that the actual question is different. So first of all, that's why I said earlier that you need to go through the question paper of at least last 5 years. So you will be able to answer the queries. So once you are able to know the question, then you will be able to write the proper question, proper answer. And secondly, आपको देखना है कि अगर उन्होंने आपसे किसी टॉपिक के बारे में पूछा तो यूपीएससी में नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपका एक बेसिक फैक्ट्स पे पूछेंगे, देन उसका कुछ ना कुछ एनालॉजी या लॉजिकल आंसर चाहेंगे. सो यू नीड टू कंक्लूड योर आंसर विद दैट लाइन. अदरवाइज आपने सिर्फ उसका फैक्ट्स लिख के अगर कंक्लूड कर दिया तो योर आंसर विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है Anuradha Soni से, sir, how does one ensure to remember everything they study while preparing for UPSC? It is next to impossible to remember everything. That's why you need to understand the concepts. That's why I suggested कि basic CBSE की बुक्स आप पढ़िए, basic referral बुक्स आप पढ़िए, यूनिवर्सिटी की में जो अच्छी बुक्स आपके सब्जेक्ट की, if you are opting for particular subject, so there are basic books which need to be thoroughly read.
और सिमिलरली आपको अगेन एंड अगेन रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने सिंपली सिर्फ एक रीड करके रख दिया एंड यू अपीयर फॉर एग्जाम, यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. So first of all, you need to select appropriate books or study material. Then you need to make your notes. You can obtain notes from some coaching institute, but don't totally rely on the coaching institute's notes. You prepare your notes, and on that basis, make small notes. First you make detailed notes. Then subsequently, whenever you are able to go through the detailed notes, then स्मॉल नोट्स आप बनाइए उनके, जो कि आप एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप उनको जस्ट वो स्मॉल नोट्स को ही जस्ट गो थ्रू करिए. जैसे पॉइंटर हो गए आपके, आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, एक पॉइंट लिखा, उसके 3 पॉइंट्स में जना वो लिख के रखिए आप. सो एक हैंडी नोट्स होने चाहिए जो आप जस्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम यू कैन गो थ्रू. बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके जनरल स्टडी के पेपर एक दिन के गैप में आते हैं, तो विल नॉट एबल टू गो थ्रू द होल बुक्स. तो एटलीस्ट आपके पास वो हैंडी नोट्स होने चाहिए. देन कार्तिक मीना का है कि विच आर द गुड मंथली मैगजीन दैट वी कैन यूज. मैंने जब एग्जाम दिया तो 10-12 ईयर बैक था, एट दैट टाइम देयर वाज प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल एंड चाणक्य की मैगजीन आती थी. अभी आप स्पेसिफिकली मुझे आइडिया नहीं है कौन सी ट्रेंड में चल रही है, बट आई विल लेटर ऑन इन्फॉर्म नेहा अबाउट these books. But there are books you can ask some current aspirants who can guide you. How many attempts in UPSC are ideal for before moving on? Attempts, so there are limitation of attempts. I think 4 attempts are there. Before after 4 attempts you cannot appear in UPSC. So don't waste your attempts. First you prepare your basic study plan. आपका एक बेसिक नॉलेज होगा, आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा. मैंने बोला आप लास्ट 5 ईयर के अगर आप एग्जामिनेशन में जब आपको 60% जो क्वालिफाइंग मार्क्स के उसके पास आप सोल्व करना शुरू कर दिया आपने, अगर आपने 2 ईयर का किया, देन फ्रेश 60 ईयर वाला पेपर आप रैंडमली उसका टेस्ट दीजिए, देन यू विल एबल टू नो कि मैं क्वालिफाइंग ला सकता हूं. देन यू स्टार्ट गिविंग. बट बिफोर appearing in preliminary examination, at least you should understand the whole course of mains examination. Sometimes what happens कि आपने prelims की तैयारी कर ली और आपने पूरी prelims qualify भी कर ली, then you get only 2 months and mains examination is very descriptive. So start your preparation with prelims as well as mains altogether. Then prelims से पहले आप 1-1.5 महीना आप 100% prelims पे फोकस करिए, 100%. देन प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं आप मेंस का रिवीजन शुरू कर दीजिए. बट आपने ये सोचेंगे मैं पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूं, मेंस का तो आपने देखा ही नहीं है, तो फिर आपका अटेम्प्ट खराब ही होना है. बिकॉज वंस यू फेल इन मेंस और इंटरव्यू, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ये मैं मेंशन करना भूल गया आपकी पूरी इसमें स्लाइड्स में कि ऐसा नहीं है जैसे ये क्या रिट्वीट का एग्जाम है कि एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया यू कैन बिकम टीचर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ऐसा कुछ है इसमें. इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. अगर आपने इंटरव्यू भी फेस कर लिया है और 1 मार्क से भी आपने आप जॉब नहीं मिली है, क्वालिफाई नहीं किया है, तो यू अगेन हैव टू compete with another 10 lakh or 5 lakhs aspirants for preliminary examination. So each time new field, new war, new competitor will be there. And how many attempts you are ready for, ये मैंने बता ही दिया. I think और कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा. Definitely, there is another question from Pooja Saini that it is important to have a backup plan while preparing for UPSC. Definitely, you should have a backup plan. And second career option should be there because as I show you the figures, out of 10 lakh, 5 lakh appears. Just forget 5 lakh, remaining 5 lakh, out of 5 lakh, only 1,000, around 1,000 candidate will be selected. So there will be a competition, and along with all the hard work, you need little bit of luck also. So sometimes your luck is not with you. मैंने ऐसे भी अटेम्प्ट देखे हैं, आज यूपीएससी मेंस का एग्जाम हो रहा है, फैमिली में कुछ कैजुअलिटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, इतना कॉम्पिटेंट बंदा है कि 100% व्यूअर श्योर कि ये सिलेक्ट होगा, इस बार अच्छी रैंक लाएगा, बट कुछ ऐसा हुआ या सडनली उसकी हेल्थ खराब हो गई. तो समटाइम्स ये होता है. तो इसलिए सेकंड you should have definitely backup plan in your mind. और अभी जो पैटर्न आया यूपीएससी का, लेट मी क्लैरिफाई दिस आल्सो कि हमारे टाइम में यूपीएससी का पैटर्न और एसएससी का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था. एसएससी
में सीसेट मेंटल एबिलिटी का एग्जाम होता था, इंग्लिश का होता था क्वालिफाइंग, वो ऑलमोस्ट बाद में सिमिलर। अभी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप एसएससी वगैरह में डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारे लिए चैलेंज वो था, उसका सिलेबस बिल्कुल अलग था, यहाँ ऑप्शनल आते थे, और एट दैट टाइम देयर वर 2 ऑप्शनल मींस, और जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री था, बैक टू बैक 2 डेज में एग्जाम होते थे, तो वो अलग था। अभी आपको एक ऑप्शनल तैयार करना होगा। जनरल स्टडीज कॉमन है, किसी भी सिविल एग्जाम में जाएं आप, एसएससी में जाएं, क्लरिकल में जाएं, स्टेट के एग्जाम में जाएं, सब जगह कॉमन चीज हो गई है, काफी पैटर्न मैच कर गया है। तो आई थिंक यू आर इन मोर कंफर्टेबल जोन देन अस, मुझे जहां तक लगता है अभी। As once you have to face failure 2 times, so what was the reason that kept you motivated for trying? हाँ, ये मैं बताया, I faced 2 time failure, but the reason was clear that I was having determination that I need to go for civil service. Somehow, I don't know why it was there, but there were relatives who were already in civil service. My father was in business, so nobody was there in civil service from my family. So sometimes I got motivated from them also, the like they behave like they were doing for society, na? So I motivated from them. And बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली होने के बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था एक माइंड में। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि आपको जैसे अर्जुन के लिए कहा जाता है कि चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए, वैसा अगर डिटर्मिनेशन है। और 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, जैसे भोलाराम देवासी है एंड श्रीनिवासन गारू टोटा है, उनके आप देखिए 7 ईयर तक कोई बंदा आया, इंसान 7 ईयर बस क्लर्क रहने के बाद में, बस कंडक्टर रहने के बाद में, आप समझिए उसकी लाइफ क्या थी। सुबह 7-8 बजे वो ड्यूटी पे जाता होगा, अपना एक साइड बाई टिकट काटना है, देन ही विल एबल टू अचीव हिज गोल। तो उसका कहीं ना कहीं माइंड में डिटर्मिनेशन था, तभी कर पाएगा, अदरवाइज आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सो डेफिनेटली एक जुनूनियत होनी जरूरी है इसके लिए। आई थिंक और कोई क्वेश्चन है नहीं। So I'm done with this. Neha, anything else? Yes, so one more query from Tanu Shekhawat. She wanted to know, nowadays there is a lot of hue and cry over online coaching and joining coaching institutions for clearing up UPSC. So how far is it essential for a student to join UPSC coaching, or can they crack it without joining any coaching institution? I have already given answer of this query, but let me clarify it again. In my case, I have not joined any coaching till interview. So as far as prelims is concerned, mains is concerned, I qualified with self-studies. And whatever notes I get from my friends and batchmates on that basis. In 2 other cases, both have not attended any coaching. And I know about so many people, I think 5-7 my friends who attended coaching and only relied on the coaching were able to get succeed in this examination. So coaching, if you prepared your base first, as I told you, go through the examination pattern, syllabus and trends, then read basic books. Then if your base is ready, then you can definitely go for coaching to improvise your writing skills, to add on in your knowledge. But if you are totally relying on coaching without studying basic books, developing basic personality, knowing current affairs, and only relying on coaching material, then it will be very difficult for an aspirant to qualify the civil service. So, in my opinion, don't blindly go for coaching. First, you prepare yourself at least 1 year. आप अपनी self study करिए, then एक लेवल आ जाता है, then you can go, definitely go. They will improve you, they will identify your lacuna, they will improve your writing skills and other things. So definitely coaching will be beneficial unless until आपका basic तैयार हो। Secondly, blindly भी नहीं चाहिए। Sometimes क्या होता है कि coaching institute वाले आपको आपका mind का पूरा विदिन बॉक्स में ही सोचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो थिंकिंग प्रोसेस उसी खत्म कर देते हैं। Sometimes you need out of box thinking, out of box writing in civil service, especially essay और मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब पर्टिकुलर आपको लिख के दिया, आपने वही पढ़ लिया, वही लिख के आ गए। बट समटाइम्स यूपीएससी नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे आस्क सम इनडायरेक्ट क्वेश्चन कवरिंग दैट टॉपिक।
सो आपके एनालिटिक एबिलिटीज डेवलप नहीं होंगे, आपने सिर्फ कोचिंग का मटेरियल एज इट इज लिख के आ गए, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द एग्जामिनर। सो नंबर तो मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर, आपके कैलिक्स को आप 20 मिले, आपको अगर 15 मिलते हैं तो यू लॉस्ट 5 मार्क्स। सो एनालिटिकल एबिलिटी शुड बी देयर, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता भी रहनी चाहिए। कोचिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बस वो आपको बिल्कुल एक डब्बे में बंद कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा। एंड चूजिंग राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो get feedback from various friends and current aspirants, newly selected civil servants, and you will be able to know the correct course for selecting the coaching institute. Thank you so much, sir. So I don't think there is any other question. Anyone, would you like to ask any other question? So I think it's time to conclude the session. And I am very, very grateful. I would like to extend my heartfelt thanks to Mr. C.P. Meenaji, who has taken time from his very, very busy schedule to address this event and furnishing us with so much of information and his own experience, motivating the students, telling them about the challenges he has faced and the strategies the students can adopt so that they can clear this toughest examination at all India level conducted by UPSC. Thank you so much, sir. We are honored. We are so much honored that you have come here, spend time with us, share your thoughts. Thank you so much, sir. And I would also like to extend my thanks to our director, Professor Dr. Rahul Tripathi, Amity School of Liberal Arts, and all the faculty members, those who have joined us in this session, and the students, especially the students, because the success of any event depends upon the participation of student. I'm very happy to see that all the students were there listening to your session, listening to the address of the resource person and asking questions, interacting with sir. So I believe that this event is successful, and I hope, sir, you have also enjoyed connecting with us and interacting with our students. Thank you so much, sir. And last but not least, but I would like to also thank IT support from Amity Noida, who has arranged this webinar online. Thank you so much, IT support, Amity Noida. Thank you so much, everyone who has participated and taken your time there. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you, sir.